Introduction, how, when and where. Now this chapter is of history, NCERT क्लास 8, जिसमें आपको बताया गया है कि हाउ, कब, कहाँ और कैसे हिस्ट्री चीज़ों की बनती है। लाइफ में हर एक चीज़ की अपनी एक हिस्ट्री होती है। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, लाइफ में डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हर एक डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ स्केच में सोचिए, आपकी लाइफ में कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। जिस दिन आपका बर्थडे है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके रिलेशंस में आपके भाई या बहन या पेरेंट्स का कोई डे है या कोई न्यू ईयर है या कोई फेस्टिवल है, वही डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह से हिस्ट्री भी लिखी जाती है। ठीक है, इस पेज में आपको यही समझाया गया है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। बहुत सी डिबेट्स हिस्टोरियंस ने की कि सभी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, पर लास्ट में ये फाइंड आउट किया कि सारी की सारी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. क्या ये सही है? नहीं, पूरी की पूरी हिस्ट्री डेट्स के बारे में नहीं है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. ऐसा तो नहीं होता कि हर समय हम हर चीज़ों की हिस्ट्री पूछते हैं, पर समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे दिमाग में आ जाती हैं। लाइक आप स्टडी कर रहे हो, कभी मे भी आपके दिमाग में आए, जिस पेपर्स पे आप लिखते हो वो पेपर्स कब बने, पेन का इन्वेंशन कब हुआ, इसके हिस्ट्री क्या है, जो टी एंड कॉफ़ी हम ड्रिंक करते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है. लुकिंग आउट ऑफ विंडो अ ट्रेन, यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवे बिल्ट. रेलवे कब बिल्ड हुई, इंडिया में रेलवे कब चलाई गई, इसकी भी एक हिस्ट्री है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरी नॉलेज हमको हिस्ट्री में मिलती है. ठीक है, देखिए, देयर इज गिवन ए एक्टिविटी, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, फॉरेन पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनेट. ये भी एक हिस्ट्री बताई गई, फर्स्ट मैप कब बना. रेनेट वर आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव to produce maps of Hindustan, an enthusiastic supporter of British conquest of India. Renner was preparing of map as essential to the progress process of the domination. ये मैप किस लिए बनाए गए? डोमिनेट करने के लिए, इंडिया के डोमिनेंस को जानने के लिए. दिस पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस willingly gave over their ancient text to Britannia, the synonyms of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. ठीक है, नाउ लिप्टन टी. ये टी के बारे में जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया गया है. ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस refer us back to notion of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happens over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. हम कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते. हम ईयर तो बता सकते हैं कब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, कब रूल शुरू किया और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा समय लगा इन चीज़ों को होने में. इसीलिए हिस्ट्री में डेट्स और ईयर्स दोनों होते हैं और ज़्यादातर एम्फेसाइज ईयर्स पे किया जाता है. We can only refer to a span of time and approximately period over which particular changes became visible. ठीक है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट की बात की गई है. लाइक हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दैट डेट इज गिवन, पर जनरली इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें डेट्स के साथ सिर्फ ईयर्स दिए जाते हैं. ठीक है, when then do we continue to associate history with a string of dates? The association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the years a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he
fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined. And in history such as these, debates about dates continue to be important. ठीक है, कुछ चीज़ों में डेट्स भी जरूरी होती हैं. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. ठीक है, विच डेट्स, कौन सी डेट्स की बात की जा रही है. बाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट. द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी compose our story of a past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events and important. If we focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर इशू की बात हो रही है. जैसे देखिए हमारा नेशनल इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, ये 1920 से ही चल रहा था. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर हमें फाइनल इंडिपेंडेंस 1947 में मिली. पर यदि इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस जगह पे पर्टिकुलर डेट का सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे समझाया गया है कि हर एक चीज़ की डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ईयर इंपॉर्टेंट होता है. पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम कब इंडिपेंडेंट हुए, हम रिपब्लिक डे कब होता है, हमारे इंडिया में रेलवे कब चली, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम कब शुरू हुआ, ये आप थ्रू आउट हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. कंसिडर एन एग्जांपल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बहुत से गवर्नर जनरल इंडिया में रूल करने आए, सबका रूल बहुत इंपॉर्टेंट था. दीज हिस्टोरीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग. ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में प्रॉपर रूल करना शुरू करता है. एंडेड विद द लास्ट वॉइस रॉय, और लास्ट में वॉइस रॉय लॉर्ड माउंट बैटन के टाइम से ब्रिटिश रूल खत्म होता है. इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड ऑफ अदर हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी एंड कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन एक्सेट्रा. ठीक है, बीच में आप बहुत से लोगों के बारे में पढ़ोगे, गवर्नर जनरल्स एंड वॉइस रॉयस के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग आप वॉरेन हेस्टिंग से एंड विद लॉर्ड माउंट बैटन से करोगे. ठीक है, इट वॉज सीमिंगली never-ending succession of governor generals and viceroys. All the dates in the history books were linked to these personalities, to their activities, policies, and achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India. Can we not write about the history of the period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of the history of Governor General? When we write history or a story, we divide it into chapters. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give a shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. How do we periodize? ठीक है, हम हिस्ट्री के बारे में को कैसे पीरियडाइज करते हैं. In 1817, James Miller, Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, History of British India. इस बुक में इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज किया है, पीरियडली उसको सेट किया है. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods, Hindu, Muslim and British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history?
वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? हम क्यों डिवाइड करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, it certain features as and appear to us, so the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between the periods, become important. They reflect of our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to next. यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल ने हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया है। बेसिकली क्यों डिवाइड किया है? इसीलिए ताकि इंडियन हिस्ट्री को हम ठीक से पढ़ सके। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो बात की है वो बेसिकली हिंदू मुस्लिम एंड मेन हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश हिस्ट्री रही है, और उसको डिवाइड करने का मेन रीज़न यही था ताकि जो आगे इंडियन भारत की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी जा सके, उसमें ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो सके कि कब से कब तक इंडियन रूलर्स ने रूल किया, कब से कब तक इंडिया में दूसरे रूलर्स का, मुस्लिम रूलर्स का रूल आया एंड देन ब्रिटिश रूलर्स का रूल आया। इसीलिए हम जेम्स एक बहुत ही बड़े अच्छे राइटर थे। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. According to this telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despot ruled the country. इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के पहले हिंदू और मुस्लिम डिस्पॉट यानी रूलर्स इंडिया को रूल कर रहे थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manner, art, institution and laws in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such a conception be accepted today? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in their period? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time? To do so, it is to suggest that the lives and the practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. ठीक है? Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ये आपको इंडियन हिस्ट्री का कैटेगराइजेशन किया गया है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में। ठीक है। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modern science, reason, democracy, liberty, and equality. Medieval was the term used to describe a society where the features of the modern society did not exist. Can be uncertain and uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study. ठीक है। ये जस्ट आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि वैसे जो आप हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री की, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, जिस हिस्ट्री की स्टडी करोगे वो एशियन, मिडिवल और मॉडर्न 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वली फ्रीडम, लिबर्टी, नॉर वॉज द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। मेनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर्स टू द पीरियड एज कॉलोनियल। ठीक है। दे कैन बी शॉर्ट क्वेश्चन इन योर टर्म, व्हाट पीरियड इज कंसिडर्ड एज कॉलोनियल पीरियड। तो आप याद रखिए, मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज कॉलोनियल पीरियड। नाउ आपको मैं समझा दूँ व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? देखिए, इस टॉपिक के शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए कि कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनी मेकिंग। लाइक जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में एस्टेब्लिश हुए, ब्रिटिश रूल आया, तो उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी की तरह सेटअप किया। ठीक है। ये आप आगे हिस्ट्री में पढ़ोगे। 1498 इंडिया वॉज discovered by Vasco da Gama. He was a Portuguese, and after that Dutch, British and French, 3 लोग यहाँ पे आते हैं, रूल करना चाहते हैं, पर लॉन्ग टर्म कॉलोनियल रूल इंडिया में ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया, इसीलिए इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है।
चलिए, हाउ डू वी नो, हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है, ये हम पढ़ते हैं। हाउ डू वी नो, what sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? ये हमें जानना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री 250 इयर्स पीछे से हमें कैसे पता चली। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब यहाँ ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया तो उनके एक कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड से उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी। ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इवन every institution plan policy decisions agreement investigation has to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, noting and reports. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये फाइंड किया कि इंडियन हिस्ट्री लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मेमोज को, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया जाए और तब उसके बेसिस पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने हिस्ट्री लिखी जाए। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, सो दे सेट अप रिकॉर्ड्स रूम्स अटैच्ड टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, द विलेजेस, तहसीलदार्स ऑफिसर्स एंड कलेक्ट्रेट, the commissionerate officers, the provincial secretariat, and the law courts all had their records rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. ठीक है, आज भी ब्रिटिशर्स ने बहुत से ऐसे लेटर्स लिखे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं और आर्काइव में रखे हुए हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शंस एंड द डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एज अ टॉप टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चला और इंडियन हिस्ट्री लिखी गई। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, and that is by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of the printing and multiple copies of these records were printed as proceedings of each government and department. और यहीं से इंडियन हिस्ट्री लिखी गई। ठीक है, आपको एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे इंडियन हिस्ट्री कैसे डॉक्यूमेंटेड की गई उसके बारे में बताया गया है। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, द नेशनल म्यूजियम एंड द 1920s की बात हो रही है। द नेशनल आर्काइव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वायसरेगल प्लेस। ठीक है, जहाँ वायसरॉय रहते थे। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश नेशनलिज्म इमेजिनेशन। ठीक है, नाउ इंडियन हिस्ट्री लिखने का सेकंड सोर्स क्या था? सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट। बहुत से सर्वे किए गए। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रॉपर जानना चाहिए। प्रॉपर नोइंग के बिना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। बाय द अर्ली 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. ठीक है, विलेजेस में कौन से सर्वे होते थे? रेवेन्यू के। विलेज एरिया में जो भी स्पेंड किया गया है उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वे करती थी। द एफर्ट्स was to know the topography, the social quality, the flora and the fauna, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administer the region. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of people in the provinces of India, noting information, caste, religions and occupation. There were many other surveys: botanical survey, zoological survey, archaeological survey, anthropological survey and forest survey. ये बताया गया है इंडियन हिस्ट्री को लिखने का तरीका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाया। When official records do not tell what efforts record, क्या चीज़ हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता नहीं चलती है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ द रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thoughts, ठीक है, what they were interested in and what they wish to preserve for
prosperity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. For that, we need to look elsewhere. Then we begin to search for these other sources. We find them in plenty through they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, and autobiographies of important personalities, and popular booklets that we sold in the local bazaar. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in the public. Leaders and reformers wrote to spread these ideas, poets and novelists wrote to express their फीलिंग्स. ठीक है, और इस तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनने लगे और चीज़ें रिटर्न में आने लगी. ठीक है, नाउ ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. ये सब उन्हीं लोगों ने लिखा जो लिटरेट थे, वो पढ़े लिखे थे, एंड दे वर द ओनर्स. आप कह सकते हो उन्होंने ही हिस्ट्री लिखी. फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड इन द ट्राइबल्स एंड द peasants and the workers in the mines of the poor on the street. Getting to know their lives is a more difficult task. Yet, this can be done if you make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. ठीक है, ये रहा आपका हिस्ट्री का चैप्टर जिसमें आपको बताया गया है एक्चुअली किस तरह से कब हमारी हिस्ट्री लिखना शुरू हुई. नाउ दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर. लेट्स रिकॉल. ये आपने पढ़ा ही है. जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस. दिस इज ट्रू. इंडियन हिस्ट्री को फाइनली कैसे डिवाइड किया गया? एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न में. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक. नो, थिंकिंग के बारे में वो कभी नहीं बताते हैं. द ब्रिटिश थ्रू आउट सर्वे वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रू. ठीक है, इसीलिए उन्होंने सर्वे किया ताकि वो इंडिया में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें. Now question and answer. What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer? उसके साथ क्या प्रॉब्लम आई देखिए. The problem with the periodization of Indian history that James Mill offers categorization Indian history into 3 parts: Indian, Muslim and British history. It is remarkable here to note that this classification is based on the domination of Indian people, firstly by the Indian rulers and then by the Muslims and then by the British. ये हिस्ट्री लिखने का तरीका नहीं था. This classification is quite biased and I believe that Indian history should be only understood in terms of its social economical development, whether its different phase. ये मेरा मानना है कि इंडियन हिस्ट्री को किन्हीं रूलर्स के अंदर डोमिनेशन में नहीं दिखाना चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? क्यों करते थे ये आपको समझ आ गया होगा. उनका मानना था कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वही ऑथेंटिक सोर्स हैं हिस्ट्री को लिखने का. द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सो एज टू गेट ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड. ठीक है. Now, how will the information historians get from old newspapers be different from that found in the police report? देखिए, जो पुलिस रिपोर्ट्स होती थी वो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में होती थी. ठीक है, और जो हिस्टोरियंस जो न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन पाते थे वो रियल इंफॉर्मेशन होती थी. यही दोनों में डिफरेंस है. ऑल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इन newspapers are having public views and most probably, whereas police reports cover a particular side of a story in any of the incident. Newspapers are generally not biased, whereas police reports sometimes have administrative influence during the reporting and inquiry. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा. जो पुलिस रिपोर्ट होती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन जिस भी गवर्नर जनरल का चल रहा है उसका इन्फ्लुएंस होता था. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे ब्रिटिश रूलर्स ने कोई इस तरह का काम किया है जो कि इंडियंस के लिए फेवरेबल नहीं है तो उसको हिस्ट्री में उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है. तो इस तरह से वो उनके रिपोर्ट्स को बायस कह सकते हैं. ठीक है. नाउ द चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर.